डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहां का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहां के उद्योग, यहां के एमएसएमई, यहां के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हां, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। साथियों, हमारा एक पक्का विश्वास है कि डेमोक्रेसी में राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन देश के विकास के लिए राज्यों का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राज्यों के विकास के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है, और इसलिए हमारी सारी योजना के केंद्र बिंदु में राज्यों का विकास हो, तेज गति से विकास हो, उस भाव को लेकर के हम सब मिलकर के चलें और 2047 विकसित भारत का सपना हम अपनी आंखों के सामने सिद्ध होता देखें। यही मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you very much, Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, on that note, we thank our Honorable Prime Minister for his inspiring address and for gracing Hyderabad with the presence today. We express our देश के विकास के लिए राज्यों का विकास जरूरी है, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हैदराबाद तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं our Honorable Governor Shri Shiv Pratap Shukla ji, Honorable Chief Minister of Telangana Shri Revanth Reddy Garu, Honorable Union Minister Shri G. Kishan Reddy Garu,
We also take the pleasure to welcome the Union Minister of State, Sri Bandi Sanjay Garu. Honorable Member of Parliament, Sri Konda Vishweshwar Reddy Garu, a hearty and a warm welcome, ladies and gentlemen, senior officials, representatives, and esteemed gathering. Ladies and gentlemen, may I now request our Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Yanamola Revant Reddy Garu, to felicitate our Honorable Prime Minister with warmth, dignity, and rich traditions of Telangana. Here we go. The Honorable Chief Minister is presenting with a special shawl and a special memento. The timeless symbol of strength, courage, శక్తికి భక్తికి సంపదకు ప్రతీకగా నిలిచే అద్భుతమైన నంది జ్ఞాపికను మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రధాని గారికి అందిస్తున్న శుభ తరుణం. This magnificent creation is not merely a memento. Ladies and gentlemen, it's a tribute of our traditions, values, and our enduring spirit of excellence. On that note, may I also request our Union Minister, Shri G. Kishan Reddy Garu, to felicitate our Honorable Prime Minister with a special shawl and a memento. ప్రత్యేకమైనటువంటి శాలువా మరియు జ్ఞాపికతోటి ప్రధాని గారిని సత్కరిస్తున్నారు కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారు. శ్రీరాముడు మర్యాద పురుషోత్తముడు అంటారు. ధర్మానికి ప్రతీక ఈ స్మారక చిహ్నాన్ని ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆశీర్వాదం మన తెలంగాణ ప్రజల మీద పుష్కలంగా ఉండాలి అని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ జ్ఞాపిక బహూకరించారు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Ladies and gentlemen, on that note, may I now request Honorable Union Minister Shri G. Kishan Reddy Garu, a distinguished leader and a dedicated son of Telangana and a dynamic voice of development in the Union Cabinet, to deliver the welcome address.